हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लॉज पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ह्यूमन राइट, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन राइट, व्हाट आर टू मेन अप्रोच टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड नेचर, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, and is human right is a legal right. So all these topics we are going to cover in this lecture today. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. Meaning of the term of human right. So, President Roosevelt, for the first time in 1941, expressed that the term human right is a new formulation of the classic phrase, the right of man. As a matter of fact, human rights are those which is belongs to an individual as a consequences of his being human. They were virtue by their being human, possess certain basic and inalienable rights, which are commonly known as human rights. Since these rights are belongs to them because of their very existence, they become ऑपरेटिव विद देयर बर्थ. सो यहाँ पे ह्यूमन राइट की हम बात करने की ह्यूमन राइट क्या होते हैं. 1941 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने इस वर्ड का यूज़ किया टर्म्स का, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो राइट्स हैं ये राइट ऑफ मैन है, द राइट ऑफ मैन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमन राइट वो राइट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द कंसिक्वेंसेस कि वो ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग की फैमिली से बिलोंग्स करता है. और ये बेसिक राइट्स होते हैं और इन राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता. कॉमनली यही राइट्स ह्यूमन राइट्स के नाम से जाने जाते हैं. सिंस दिस राइट्स आर नॉट बिलोंग्स टू देयर वेरी एग्जिस्टेंस बिकम ऑपरेटिव विद देयर बर्थ, और ये बर्थ से ही मिल जाते हैं. अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया J.S. वर्मा, ह्यूमन डिग्निटी इज द quintessence of human right. All those rights which are essential for the protection of maintenance of dignity of individual are certain condition in which every human being can develop his personality to the fluent extent may be termed human right. So according to Chief Justice J.S. Verma, human dignity is the quintessence of the human rights, and all those rights which are essential for protect the and maintenance of the dignity of individual, or, and certain condition in which human right can be develop his personality, fullest extent may be termed human right. So उन्होंने भी यही बोला जस्टिस J.S. वर्मा ने. And according to Vinela Declaration 1993, all human rights derive from the dignity and the worth inherent in the human person, and that the human person is the central subject of human right and fundamental freedom. Okay, so यहाँ पे एक definition है. According to D.D. Basu, human rights are those minimum rights which every individual must have against the state or other public authorities by virtue of being a member of human family irrespective of any other consideration. सो डी बसु ने बोला कि ह्यूमन राइट मिनिमम वो राइट होते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट मिलने चाहिए बिकॉज ऑफ वो एक ह्यूमन फैमिली से बिलोंग करता है in respective of any other consideration. And according to the section 2D of the Protection of the Human Rights Act 1993, human rights mean the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodies in the International Convent and enforced by the Code of India. So according to Susan Muller Okin, human rights as a claim of something of crucial importance for human life. And according to Dr. Purohit, human rights are basic value which underlie that human being born in any part of the world are equal in dignity and rights. So according to Dr. Purohit, उन्होंने ये बोला है कि जो ह्यूमन राइट्स है वो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी पैदा हुए हो, एंड उसमें आप हर एक को इक्वली डिग्निटी का राइट है. ओके. And it is to be noted that Text 2D Human Rights Act 1993 give a narrow definition of human right and does not include all fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution or embodies in the International Convention on Human Rights. So basic feature of the human rights: inherent in the nature of all the individual. So अगर हम बात करें inherent in the nature of all the individual,
तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स बीइंग देन बर्थ, the birthright are inherent in all the individual in respective of their caste, creed, religion, sex and nationality. So जो इंडिविजुअल को राइट्स मिलते हैं वो उसकी बर्थ से ही मिलते हैं एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की उसकी कास्ट, क्रीड या उसकी फिर नेशनलिटी के बिहाफ पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करें. ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमम राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर कंसिड्रेशन. ओके, तो ह्यूमन राइट्स मिनिमम वो राइट्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, बिकॉज वो ह्यूमन फैमिली से बिलोंग करता है, मिलते हैं. ठीक है. एंड नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी लेजिस्लेचर. दीज एज्यूम the position of natural right is human life and fundamentals for man existence. So human rights are fundamental in nature and are inevitable for existence of the people. The human rights being eternal part of the nature of human being are essential for the development of the individual personality and human qualities, intelligence, talent, and consequences, and enable them to satisfy the spiritual and other higher demand. सो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स में यही एक फंडामेंटल राइट है. ओके, एंड नेक्स्ट इनएलिएनेबल. सो इन राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता. जो ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन and from one generation to another, etc. Also because no one give them right or none can take them away. Okay, so these rights are inalienable, universal. So all these rights are human rights are universal, which mean they belongs to the everyone, not matter what their race, religion, caste, sex, economical status, like so birth, etc. They are for everyone. Okay, and interrelated and invisible. So interrelated and invisible, human rights are called by the various name, sometimes separate from into different category like civil and political right, economical, social, cultural right. Every right depend on another for its fulfillment. No right can call to be practiced without other rights. ओके, सो इन इंटररिलेटेड राइट एक दूसरे के साथ में. टू मेन अप्रोच रिगार्डिंग द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द ह्यूमन राइट. Here are following two approach to explain the right of man. First, philosophical or theoretical approach. There are five main theories of philosophical approach to explain the right of man. First, natural right theory. In this traditional doctrine of natural law, the law right are against other people. These rights are having corresponding duties in the sense that some other person is under duty toward the holder of the right. Human rights are claimed against the state in representatives and functionaries. According to the natural right, there are three characteristic features. Human rights are said to be recognized. Human rights are inalienable, natural and inherent, and all the human beings are said to be essential, equal, essentially equal. So इसमें हम बात करते हैं नेचुरल राइट में. इन्होंने बोला कि नेचुरल राइट में तीन राइट आपके हैं, जो आपके इसके तीन बेसिक फीचर्स हैं कि ह्यूमन राइट हैं जो वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इनअलाइनेबल है यानी उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, नेचुरल होते हैं और इनहेरिट होकर आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं. ऑल द ह्यूमन बीइंग आर सेड टू बी एसेंशियली इक्वल, और एसेंशियली इक्वल है हर एक ह्यूमन बीइंग. दूसरा बात करते हैं, दूसरा राइट है हमारा द लीगल राइट थ्योरी. अकॉर्डिंग टू बेंथम, राइट आर क्रिएशन ऑफ द स्टेट, hence they are neither absolute nor inherent in the natural man. These rights, such as right of life, liberty, or properties, are artificial, created by the law of the land. According to the theory, human rights are recognized by the state and hence protected by the state. So यहाँ पे बेंथम ने कहा कि जो ये आपके ह्यूमन राइट्स हैं ये आपकी क्रिएशन है स्टेट की. तो इन ये ना ही एब्सोलूट राइट है ना ही इनहेरिट है हुए हैं नेचुरल मैन को. ये राइट आपके द लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. ओके,
देन दूसरी थ्योरी है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द राइट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी राइट आर क्रिएशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस. इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम इन द course of time concerned in the specific form of right. This custom have been given maximum magnitude. So इन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल थ्योरी है, जो राइट है वो क्रिएशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि कस्टम को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको हम लोग राइट बनाते हैं. द सोशल वेलफेयर थ्योरी एंड सोशल एक्सपेंडिचर थ्योरी. द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी से दैट लो कस्टम एंड नेचुरल राइट आर द कंडीशनड बाय सोशल एक्सपेंडेंसी. एंड जो लास्ट है आपकी आइडलिस्टिक थ्योरी या पर्सनैलिटी थ्योरी. दिस थ्योरी इंसिस्ट ऑन द इनर डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज फुल potentially and treat right of personality as a supreme and absolute. All other rights such as right to life, liberty and personality are derived from fundamental right. So इसमें ये बोला इस थ्योरी में ये इस जो इस ये आदमी के इनर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज फुल पोटेंशियल एंड ट्रीट राइट्स. ओके, सो आइडलिस्टिक थ्योरी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेन अप्रोच. लाइक फर्स्ट अप्रोच में हमारी 5 ये थ्योरी थी एंड सेकंड है pragmatic approach. Here every right, whether it has been perceived or inalienable or otherwise, can have validity and effectiveness only through some process or institution. Thus it cannot be defined without reference of some institution structure. और इसमें pragmatic approach में क्या होता है कि here every right whether it has been perceived or inalienable, कि वो अगर ऐसा हो कि उसको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कैन बी अदरवाइज कैन हैव वैलिडिटी हैव इफेक्टिवनेस ओनली थ्रू सम प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन. तो ये किसी प्रोसेस के थ्रू होगा या फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू होगा. दस इट कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट रेफरेंस ऑफ सम इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर. वो बिना किसी इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर के डिफाइन नहीं किया जा सकता. अब काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स. अकॉर्डिंग टू लुईस बी सोन, ह्यूमन राइट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 kinds. Human rights of first generation, human right of second generation, human right of third generation. So human right of first generation देखते हैं. It is to be noted that the right contained in the Convent on the Civil and Political Rights come under the category that see their origin in the 13th century in Magna Carta. सो यहाँ पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल राइट और जो सिविल राइट है इस कैटेगरी के अंदर इन राइट को रखा गया और 13th सेंचुरी में इन्हें मैग्ना कार्टा का है. दीज राइट्स आर दोज विच प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, होम, करस्पॉन्डिंग राइट टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, इन ह्यूमन बिहेवियर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. और इसमें ये सारे राइट आपके डाले गए हैं, लाइक right to protection of the life and personal liberty, right to privacy, home, correspondence and right to own property, freedom from torture and inhuman and degrading treatment. ये सारे rights इस फर्स्ट जनरेशन के rights हैं. अब human right of second generation. These rights refer to the economical and social rights which are considered have been originated in the Russian Revolution in 1970 and in the Paris Peace Conference in 1990s. These rights include right to adequate food, clothing, housing and adequate standard of living and freedom from hunger, right to work, right to social security, right to physical and mental health, education, etc. These have been provided in the International Convention on economic, social and cultural right. Okay, so ये second generation होगी. Human right of third generation. According to Louis B. Sohn, individuals are also member of such unit, group and communities as a family, religious community, social club, trade union, professional association, racial group, people, nation and state. It is not supervising. Therefore, these international law not only recognize the inalienable right of individual but also recognize certain collective rights exercised jointly by individuals who are grouped into larger community including peoples and nations. These rights include the self-determination, right to development, right to peace, etc. So इसके अंदर थर्ड डिफिनेशन में ये राइट आते हैं. And now, is human right is a legal right? So a natural question arises to the consideration here is whether human right is a legal right. It may be noted that legal right
is a right which is recognized and protected by the legal system. Right. Yes, human rights are considered legal right as they are enriched in international and national legal framework. Human rights are inherent to all human beings, regardless of their race, gender, nationality, religion, or any other status. Therefore, it is responsibility of the government to protect and promote those rights through the establishment of legal framework, institution, and policies. In many countries, human rights are protected through constitutional provisions, national legislation, and international agreements and treaties. Violation of human rights can result in legal consequences such as criminal charges, civil lawsuit, or international sanctions. So, all this about it. And now, please, thanks for watching. Like, comment, share, and subscribe the channel. Thank you very